Assalamu alaikum everyone and welcome to another class of spoken English idioms. आज हम लोग कवर करेंगे idioms के ऊपर. What idioms are, how can you use it in a sentence and इसका background क्या होता है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, and we will be covering up some of the slang words as well. So every language has its own unique collection of sayings and phrases. ठीक है, हर एक लैंग्वेज के कोई कहावत वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पे हर एक लैंग्वेज ने बनाई होती हैं. सो दीज एक्सप्रेशंस ऑफन कंटेन मीनिंग्स दैट मे not be obvious by simply looking at the individual words contained therein, and we call these expressions idioms, right? And let's have a literal meaning of the idiom. An idiom is a widely used saying or expression that contains a figurative meaning. जैसे मैंने आपको कहा कहावत, ठीक है, figurative meaning का मतलब कहावत होता है. That is different from the phrase's literal meaning. For example, if you're feeling, or if you say that you're feeling under the weather, so this does not literally mean that you're standing underneath the rain या फिर आप गर्मी के नीचे खड़े हैं, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होता. So under the weather is an idiom that means sick or ill, alright? So इसका ये मतलब होता है. Let's have a look at some idioms. We will be covering a lot of idioms today, maybe 35 roundabout idioms हम लोग cover करेंगे जो कि आप लोग sentences के अंदर अपनी everyday life में use कर सकते हो, and it will have a good meaning, alright? So let's just start with a blessing in disguise. Now this means that it is a good thing which happened to be bad at first. यानी कि पहले वो चीज़ गलत थी, maybe for that matter, and then it turned out to be good. For example, selling that car was a blessing in disguise for me. यानी कि पहले तो मैं बहुत पछताया उसको बेच के, लेकिन उसके बाद it turned out to be good. Why? Because maybe that person could have bought a newer car, a better car, or maybe anything. Next is a picture is worth 1,000 words. This means that if you don't have a video to show or a story to tell, even a picture can tell and make you understand everything. ठीक है, so इसका literal meaning ही है, यानी कि a picture is worth 1,000 words. That means कि picture की भी बहुत ज़्यादा worth है या value है. For example, I am not exactly understanding what you are trying to tell me. Can you show me a picture? As a picture is worth 1,000 words. इसका ये मतलब होता. Next we have you live and you learn. Now this means that you learn from your mistakes. For example, I flunked the chemistry paper. Flunked मतलब failed. I flunked the chemistry paper, but you live and you learn. So अपने पेरेंट्स को आप लोग अगर कन्विंस करना चाहते हैं, if you have flunked in anything, then you can say, Dad, although I have failed my chemistry paper, but you know, as you live, you learn. So उनको तसल्ली दिलवाने के लिए you guys can use this idiom as well. And next is you can't और you don't. ठीक है, can't या don't दोनों words use हो सकते हैं यहाँ पे. Judge a book by its cover. This means that don't think and make decisions by just looking at the people before talking to them. यानी कि किसी के लिए उसको देखते ही उसके लिए राय नहीं कायम कर लेनी चाहिए जब तक कि हम लोग उस पर्सन से बात ना कर सकें. For example, she might look rude, but don't judge a book by its cover. Alright? Next we have you can't have your cake and eat it too. Now this does not literally means कि आप अपना केक ले भी नहीं सकते और खा भी नहीं सकते. Why? Because in literal meaning, whenever you put a cake in a plate, you eat it by yourself. But over here this has some other meaning. Let's have a look at the meaning.
This means that you can't have everything that you wish for. आप लोग जो भी सोचते हो वो आप लोगों को नहीं मिलता, and that is a fact as well. Other than that, a person is a golden spoon child. A middle class person cannot just have his cake and eat it too. ये भी एक सेंटेंस में आ सकता है जो मैंने आप लोगों को बताया मीनिंग. आई वॉज जस्ट बेसिकली ट्राइंग टू tell you the meaning of it, but let's have a look at the example that I wrote. Either take the cell phone or laptop. You can't just have your cake and eat it too. Okay? This might sound odd for you guys somewhere कि यहाँ पे इस सेंटेंस में इस ईडियम का क्या मकसद हुआ, बिकॉज यहाँ पे तो केक की बातें आ रही हैं एंड पीपल ओवर हियर आर नॉट सो मच यूज्ड टू दीज सॉर्ट ऑफ ईडियम्स, तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी हो सकता है, बट डू यूज दीज वर्ड्स व्हेन एवर यू सिट समवेयर एंड यू आर कॉन्वर्सेटिंग इन इंग्लिश, या आपने किसी से कोई बात करनी है, फॉर दैट मैटर कोई इंटरव्यू चल रहा है आपका. दिस विल लीव अ गुड इम्प्रेशन in front of the next person. Why? Because अगर तो आप लोग एक formal meeting में बैठे हैं and that person doesn't know its meaning, that then he will be really impressed with you because he cannot just ask you what this means, right? So this is a very good trick to impress someone कि आप इस तरह के थोड़े बहुत different idioms और different, you know, जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ पहले helping verbs वगैरह, phrasal verbs इस तरह के use किए हैं, बताए हैं, you guys should use them in your vocabulary from now on. Second is, the next one is, you can say that again. इसका literal meaning भी यही होता है, you can say that again. लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ होगा? This means that if you agree to something very strongly, alright? So उसके लिए हम लोग you can say that again phrase use करते हैं. For example, the new model of Civic is amazing, and I will respond, or the next person who also likes Civic will respond, you can say that again. Okay? इसका मतलब होता है कि I very strongly agree with you. Next we have to wrap your head around something. अब रैपिंग से मतलब तो रैपिंग होता है जिस तरह आप लोग गिफ्ट रैप करते हो, बट यू आर नॉट गोइंग टू बी रैपिंग योर हेड विद द गिफ्ट रैप, बट दिस एक्चुअली मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग और फाइंड वे टू एक्सेप्ट समथिंग. ठीक है, यानी कि आप ज़बरदस्ती उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हो उस चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टिल कांट रैप माई हेड अराउंड दैट, वाई आर वी गोइंग आउट इन दिस वेदर. यानी कि अब आप उस चीज़ से सच अग्री नहीं कर रहे थे कि वेदर ख़राब है एंड वी शुड नॉट गो आउट राइट नाउ, बट यू स्टिल कांट रैप योर हेड कि आपको नहीं, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट कि हम लोग क्यों जा रहे हैं बाय. ठीक है, तो हम लोग ये ईडियम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव, वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट. नाउ द ब्रिज एज एन नॉट अ फ्लाई ओवर या कोई इस तरह का ब्रिज नहीं, बट दिस मीन्स दैट यू विल नॉट वरी अबाउट अ फ्यूचर प्रॉब्लम करंटली, बट यू विल डील विद इट लेटर. अब अगर आप लोग एक कॉन्वर्सेशन में हो एंड अ पर्सन इज वरिंग अबाउट अ प्रॉब्लम विच विल हैपन इन द फ्यूचर, और विच माइट हैपन, ऑब्वियसली नॉट विच विल हैपन, यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर इज, सो विच माइट हैपन इन द फ्यूचर. सो उसके लिए ये सेंटेंस इस्तेमाल होता है कि डोंट वरी अबाउट द रेन, वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट. यानी कि इफ अ पर्सन इज सेइंग लेट्स नॉट गो, इट माइट रेन ओवर देयर एंड द वेदर माइट बी बैड, सो यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू देम, डोंट वरी अबाउट द रेन, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ पीस ऑफ केक. ये आप लोगों ने, आई एम प्रीटी श्योर you guys must have heard this way too many times. Now this means that something which is really easy, like it's a piece of cake. बहुत आसान चीज़ को हम लोग piece of cake में इस्तेमाल करते हैं. For example, sorry, passing that paper was a piece of cake for me, or passing that exam was a piece of cake for me. ठीक है, किसी भी तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं.
Actions speak louder than words. This is also a very good phrase or a very good idiom to use. But what this means? This means that what someone actually does mean more than what they said they will do. ठीक है? What someone actually does mean more than what they say they will do. For example, I am going to wait for him to show me that he respects me because actions speak louder than words. ठीक है, ये भी बहुत इट्स अ वेरी गुड ईडियम और काफ़ी ज़्यादा हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑलराइट, okay, we have so many idioms to learn, so I'm not going to bore you guys. हम लोग यहाँ पे अपना पहला मॉड्यूल एंड करते हैं एंड नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग कंटिन्यू करते हैं. Now we are going to learn about the idiom add insult to injury. ठीक है? This might seem odd for you guys a little bit, but इसका मतलब क्या होता है? This means to act in a way that makes a bad situation more worse. इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कना. नाउ 100% उस तरह का ये फ्रेज़ नहीं है या उस तरह का इडियम नहीं है, बट दिस माइट सीम द सेम टू यू गाइज एज वेल. हाउ? लेट्स हैव एन एग्जांपल. ही वाज गेटिंग स्कोल्डेड एंड टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी हिज ब्रदर स्टार्टेड लाफिंग. ऑलराइट, नाउ आप लोगों को इसका थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि एज ही वॉज गेटिंग स्कोल्डेड बाय हिज डैड या बाय हिज फादर और एनी वन, तो टू एड इंसल्ट टू इंजरी हिज ब्रदर स्टार्टेड लाफिंग. नेक्स्ट वन इज एज चीप एज चिप्स. दिस मीन्स दैट समथिंग विच इज रियली रियली चीप. कैसे? या एग्जाम्पल में हम लोग इसको देखते हैं. You can pay the bill of popcorns as they are as cheap as chips. यानी कि बहुत सस्ते हैं and you can pay the bill so it won't hurt you, या आपका इतना खर्चा नहीं करवाएगा. So you can use this idiom like this as well. Beat around the bush. Now this means to avoid saying something because it is not good. यानी कि घुमा फिरा के बात करना और आप एग्जैक्ट वर्ड्स जो आपको कहने चाहिए you are not using that. Why? Because that thing might be unpleasant or not good or you're feeling uncomfortable saying it. का मतलब होता है beat around the bush. Okay? For example, well, I'm not going to beat around the bush. You smell bad. कि मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोल दी और ये मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा. ठीक है? नेक्स्ट इज बेटर लेट देन नेवर. ये आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने अक्सर पढ़ा होगा मोटरवेज के ऊपर. ठीक है? लगा होता है, बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा होता है अक्सर वो फ्लाईओवर्स जो हैं उसके ऊपर, एंड इट्स रिटन बेटर लेट देन नेवर. दिस मीन्स टू अराइव समवेयर लेट देन नॉट टू अराइव समवेयर एट ऑल. ठीक है? एक सेंटेंस तो ये है प्लीज ड्राइव स्लो इन रेन, बेटर लेट देन नेवर, कि ना पहुंचने से बेहतर है कि आप लेट पहुंच जाओ. उसके अलावा दिस कैन बी यूज्ड इन अ सार्कास्टिक वे एज वेल, कि किसी को टॉन्ट करने के मामले में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. फाइनली यू अराइव्ड, सो इट्स यू विल से फाइनली यू अराइव्ड, बेटर लेट देन नेवर. आप इस तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि चलो एटलीस्ट यू केम, आपकी बहुत मेहरबानी कि आप आ गए, ना आने से तो बेहतर है कि आप लेट आ गए बट यू केम. ठीक है? नेक्स्ट इज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन शो. दिस मीन्स टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज टू मच डिफिकल्ट फॉर यू बट यू आर ट्राइंग टू डू इट. ठीक है? यानी कि कोई चीज़ बहुत मुश्किल लग रही है आप लोगों को बट आप लोग स्टिल उसको करने की कोशिश कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू विद द स्पोकन इंग्लिश कोर्स दैट आई टुक. जो आप ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हो दैट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू बट यू आर स्टिल डूइंग इट. ठीक है? तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो. एंड टेंस मैंने चेंज कर दिया,
वाई? बिकॉज ऑफ माई सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं. सो आई एम श्योर दैट अब आपको टेंसेस को चेंज करना भी सेंटेंसेस के साथ आ गया है. नेक्स्ट वन इज बाइट द बुलेट. नाउ बाइट द बुलेट, in the literal sense you cannot. You're just gonna be having your teeth broken. Okay, anyways, ये एक idiom में ही इस्तेमाल हो सकता है. This means to force yourself to do something which is difficult or awkward. Force करना है कि अपने आप को वो चीज़ करने के लिए. I'm going to bite the bullet and reach at the top of the mountain. यानी कि माउंटेन की टॉप पे पहुंचना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. यू ऑल नो दैट कि वहाँ पे हाइकिंग होती है, ट्रैकिंग होती है. बट आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट. सो यू आर एक्चुअली बाइटिंग द बुलेट. Next is break a leg. Now, don't break someone's leg, but over here, break a leg means ke good luck. For example, you're so confident when you teach, go break a leg. ठीक है, या break a leg आप लिख सकते हो, या go break a leg tonight. इस तरह भी हम लोग कह सकते हैं. Break the ice. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ईडियम है और मैं अक्सर यूज़ करता हूँ. ब्रेक द आइस मीन्स, दिस मीन्स टू मेक पीपल हु हैव नॉट मेट विद ईच अदर फील मोर कंफर्टेबल. ठीक है, यानी कि एवरीबडी नोज के जब आप फर्स्ट मीटिंग किसी से करते हो, आपके कोलीग्स हैं या आपके कोई फ्रेंड के फ्रेंड हैं और एनीवन, तो इट्स अ बिट अनकंफर्टेबल, राइट? ख़ास तौर पे ओके, क्लास फेलोज़ की बात ही कर लेते हैं कि क्लास फेलोज़ जब आपस में एक दूसरे के साथ फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा उस पोजीशन में होते हैं कि फॉर्मली मिलते हैं, आपने क्या किया, आपने क्या किया, एंड आफ्टर दैट यू नो व्हेन यू गेट बेस्ट बडीज यू कैन टॉक देम हाउएवर यू वांट. सो एक आइस ब्रेकिंग सेशन होता है, यानी कि आपने उनके साथ उस तरह से कॉन्वर्सेशन कर ली, समथिंग लाइक दैट, कि वो आइस ब्रेक हो गई है. सो लेट्स हैव अ लुक कि हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे. आई एम गोइंग टू ब्रेक द आइस बाय मेकिंग यू ऑल कॉन्वर्सेट एट द डिनर पार्टी. ठीक है, नाउ दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं आप लोगों के बीच में वो जो ऑकवर्डनेस है या वो अनकंफर्टेबिलिटी के जोन जो है उसको मैं ब्रेक करवाऊंगा बाय ब्रेकिंग द आइस. और वो कैसे होगा? जब मैं डिनर पार्टी पे आप सब लोगों की आपस में कॉन्वर्सेशन करवाऊंगा उस तरीके से. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू कॉल इट अ डे. नाउ टू कॉल इट अ डे मीन्स टू फिनिश ऑफ द डे or stop doing whatever you were doing. ठीक है, यानी कि उस डे को ख़त्म करना. Why? Because आप थक गए हो मे बी, या the day is off, the time is done, या you have to go somewhere. तो इन सब चीज़ों के लिए आप ये कह सकते हो to call it a day. Now let's have a look in the example कि हम लोग कैसे यूज़ करेंगे. It's 1 a.m. already. I think we should call it a day. ठीक है, अब एक एक्सप्रेशन यूज किया कि अब टू कॉल इट अ डे हम लोग सिंपली कह देते तो इट माइट बी समथिंग के पीपल वुड हैव सेड कि व्हाई, ऐसी भी क्या बात हो गई है टू कॉल इट अ डे. बट उसको हम लोगों ने जिस एक्सप्रेशन में यूज किया दैट इट्स 1 a.m. ऑलरेडी, मतलब इतनी लेट हो गई है. आई कुड हैव सेड इट्स लेट, आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे, बट दैट वुड हैव साउंड सो सिंपल. उसमें कोई इंटरेस्टिंग फीचर नहीं आना था और वो ये जो हमारा ईडियम है ये इस तरह से इस्तेमाल नहीं होना था. बट एज आई यूज्ड दिस एक्सप्रेशन, सो आई एम फोकसिंग ऑन 1 a.m. यानी कि बहुत लेट हो गया है, अब ख़त्म करते हैं दिन को. ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. This is also very different idiom and ज़्यादा नहीं सुना होगा आप लोगों ने, but this is also a very good idiom to use. This means something that is very expensive. कोई अगर बहुत महंगी चीज़ है और उसके लिए हम लोग ये सेंटेंस या ये idiom इस्तेमाल करेंगे. Let's have a look in the example. You just ruined my new t-shirt. It costed me an arm and a leg. यानी कि तुमने मेरी नई टी शर्ट या नई शर्ट खराब कर दी है. इट वॉज सो एक्सपेंसिव दैट इट कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग. इस तरह भी आप सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हो. और यू कैन डायरेक्टली राइट इट कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग. तो दिस बेसिकली मीन्स दिस सेंटेंस ओवर हियर
जो फुल स्टॉप के बाद हमारे पास ये ईडियम है, इसका मतलब ही ये होता है कि दैट थिंग वाज वेरी एक्सपेंसिव, तो इस वजह से तुम इट कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग. ऑलराइट. नेक्स्ट इज कट कॉर्नर्स. Now, cut corners means to do something in the shortcuts. For example, shortcuts मतलब छोटे छोटे तरीके shortcuts ढूंढना, उसमें काम करना. For example, the audit that Anam did is of very poor quality. I think she may have cut some corners. Now, what this sentence means over here is, जो अनम है उन्होंने बहुत बुरा ऑडिट किया है. क्यों किया है इतना बुरा ऑडिट? क्योंकि शी माइट बी फाइंडिंग सम शॉर्टकट्स इन देम, शी माइट बी गेटिंग बोर्ड while sitting on the seat and just doing the audit and just sitting and listening to things. So उन्होंने एक शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल कर दिया काम करने का, जिसकी वजह से वो पकड़ी तो गई, लेकिन अब उसको अगर हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो वो इस तरह करेंगे दैट द ऑडिट द एनम डिड is of very poor quality. I think she may have cut some corners. Okay. All right. The next one is cut somebody some slack. This means to give someone some, या break कह लो आप लोग, gap कह लो, इसको कुछ भी कह सकते हो. So in the example, we will say, as it was the last day in our university, the dean cut us some slack. यानी कि हमारे यूनिवर्सिटी का लास्ट डे था, जिसकी वजह से डीन gave us some break, या he gave us off, or anything for that matter. ठीक है, तो उसका मतलब होता है cut somebody some slack. And okay, it's been 11 minutes now. See you in the next module.